positive, negative. Just see again, I am telling you Sarthak and all the three other of जो है, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दिस इज गिवन quadratic equation, then according to quadratic formula, x is given by minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Inside this expression is taken as capital D. So we get this. Now, case 1, if D is greater than 0, then x will be equal to minus b plus square root of D upon 2a, and also x will be minus b minus root D upon 2a. So if discriminant is greater than 0, we have two uh, real and distinct roots. Write it down, Sarthak, Nidhi, Raghav, or Amritanshu. You also note it down. Then second case, case 2 will be when capital D is equal to 0. Case 2 is D equal to 0, discriminant it is called. So when D is equal to 0, from here what is obvious is that x will be equal to minus b upon 2a, है ना, क्योंकि d का तो हमने 0 यहाँ पे वैल्यू जब होगी d की, तो x will be equal to minus b upon 2a. इसको यहाँ पे हम सिंगल रूट नहीं कहते हैं, वी से देयर आर two roots of the same value, in their values coincide. So in this case, when d is equal to 0, we will have x. So यहाँ पे भी हम लिखेंगे, in this case quadratic equation has two real and equal roots. कि थोड़ा सा ये इसको यहाँ मैं सेपरेट कर देता हूँ. और थर्ड केस,
केस 3 में d की वैल्यू लेस देन 0. When d is less than 0, then as you can very well see, square root of a negative number is not real. So when d is less than 0, x यहाँ पे x obtained will not be real. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं no real roots. For example, suppose करो d की वैल्यू -8 मान लो हो, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ d है, that is a square root of -8, not real. ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे. सॉरी, -8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये. सॉरी. देन एग्जाम्पल 18 हमें जो है नेचर ऑफ फ्रूट्स डिस्कस करने के लिए कह रहा है ऑथर. तो देखो एग्जाम्पल 18 में हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -2x + 1/3 = 0. सपोज करो इस डिनोमिनेटर को हटाना है, तो यू कैन राइट इट एज 9x² है ना, एलसीएम लेने के बाद 9x² -6x + 1 = 0 है ना. It can be written in this form also. Now here comparing with ax² plus bx plus c = 0, we have a = 9, b = -6 and c = 1. Now capital D है ना, discriminant. This is given by b² - 4ac. So b here is -6 -4 into 9 into 1. So it is coming out to be 0. Okay. Now just see, you had done this case too. जब d की वैल्यू 0, तो जो रूट्स होंगे दे आर रियल एंड इक्वल है ना. सो बिकॉज d is equal to 0, roots of given quadratic equation are real and equal. यहाँ पे 2 लिख लो, 2 रूट्स.
अब इसने कहा है फाइंड देम। ओके, रूट्स को फाइंड आउट भी करना है। Because x here is minus b upon 2a, comma again minus b upon 2a, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमने d को 0 पुट कर दिया है। सो जब ये 0 हो गया तो ओनली रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज minus b upon 2a. So from here b की वैल्यू कितनी है, -6, तो यहाँ पे +6 हो गया। अपॉन 2a मीन्स 2 into 9, and again ये same है ना। So from here we get 1/3 comma 1/3. Sorry. Tomorrow जो है we will discuss some questions from the R.S. Agrawal. Or should I give you some homework? Exercise 4.4, can you do by yourself? Yes, sir. Exactly, that was the answer I was expecting. तो आपका होमवर्क जो है कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4। Okay, that's all for today. Let's meet together again tomorrow.